来关心巴勒斯坦伫2日的时阵发生2件严重死亡的车祸。伫因的西南部有一架巴士滑落山坎，造成12个人死亡，32个人受伤。因若伫因的东北部有一架载24个乘客公车摔落真深的山坎，包括2个负责人，也有1个囡仔在内，车底24个人是拢总不幸死亡。 巴士滑落去山坎时阵，过几路电，规台车体拢变形，造成重大的死伤。这台车是自伊拉克经过伊朗要登去巴基斯坦，伫咧西南部马格兰滨海公路出代志，车顶的巴基斯坦乘客拢是要去朝圣的，引起伊拉克圣城卡尔巴拉参加纪念活动。警方表示，初步看起来应该是车挡啊歹去。伫几点钟了，巴基斯坦东北部巴控克什米尔旁遮普邦东边的卡胡塔区，有一台巴士 滑落去山坎，车顶24个人，包括2位妇女加1个囡仔，全部死亡。गाड़ी में टोटल 24 लोग ही थे और 24 की डेथ हो गई। ये चादरों वगैरह परने वगैरह जो है इनमें बांध के हमने इन जो डेथ हो गई थी जिन लोगों की वो हमने उनमें बांध के ऊपर लाए। कुछ लोग सीटों के अंदर प्रेस हो चुके थे वो हमसे निकल ही नहीं रहे। 巴基斯坦常常发生这种交通意外，大部分拢是因为交通安全规则执行了无够严格，驾驶的训练无够，抑个交通基础设施拢无伫咧保养，所以若逐回出代志就死伤惨重。公司新闻黄文玲报道。